बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट और एमिली डिकिंसन की पोइट्री और उनकी लाइफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि पीपीएससी में पूछे जाते हैं या पूछे जाने वाले हैं, और एफपीएससी इंग्लिश लेक्चर में जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इनसे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं सो आप आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ एमिली डिकिंसन वाज डैश नॉन इन हर लाइफ। वो किस तरह अपनी लाइफ में जानी जाती थी? कंसिडरेबल थी, लार्ज थी, सिग्निफिकेंटली थी, लिटल थी। तो वो लिटल नॉन थी क्योंकि वो ज़्यादातर तन्हाई में रहना पसंद करती थी और शी वाज मोस्ट ऑब्सेस्ड विद डेथ। सो एविडेंस जस्ट दैट डिकिंसन लिव्ड मच ऑफ हर लाइफ इन आइसोलेशन में उन्होंने अपनी लाइफ गुजारी थी। शी डेवलप्ड पंचेंट फॉर डैश क्लॉथिंग एंड वाज नोन फॉर हर रिलक्टेंस टू ग्रीट गेस्ट्स वाइट क्लॉथिंग। हर फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री वाज पब्लिश्ड इन, उनकी जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोइट्री थी दैट वाज पब्लिश्ड इन 1890। अ कॉमन थीम यूज्ड बाय डिकिंसन वाज, उनका जो ज़्यादातर थीम था यानी मोस्ट कॉमन थीम जो था उनका वो जो यूज़ होता था दैट वाज डेथ। हर फेमस पोएम बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डैश क्या थी? बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर लाइफ डेथ, बस दैट इज़ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। What two images does Dickinson use to symbolize success? In success is counted sweetest, that is the nectar and the victorious army. What does the poet describe as the door ajar in I cannot live with you, that is the ocean? Who entombed near the speaker of I died for beauty, that is one who died for truth. Dickinson was dash friend with any important poets, that was she was not friend of any important poet. In I heard a fly buzz, what cuts the speaker off from the light, that is the fly's wing. How many poems were discovered among belongings of Dickinson, that is nearly 1800. But जो उसकी लाइफ टाइम में पब्लिश हुई थी that was 10. Dickinson was a dash writer, that was a prolific writer. And the next is Robert Frost's poem dash written in 1916 often read at graduated ceremonies. Graduated university ceremonies across the United States, that is the road not taken. And next is as a special guest at John F. Kennedy's inauguration, Frost became a poetic force and the unofficial dash of United States and the unofficial poet laureate of United States. During his lifetime, Frost received more than dash degrees, 40 degrees. And the next is the old neighbor loves a wall because ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट की एक पोएम ही है मेंडिंग वॉल, वहाँ से है कि ओल्ड नेबर जो है वो वॉल से प्यार करता है। क्यों? बिकॉज ही इज एल्डेस्ट जस्टेड वॉल। ही रिपीट्स द सेइंग ऑफ हिज फादर दैट इज गुड फेंसेस मेक्स गुड नेबर, ये भी उसी की लाइन है। द ओल्ड मैन हैज़ डैश ट्रीज इन हिज फार्म, ओल्ड मैन के फार्म में क्या थे? दैट वर पाइन ट्रीज। द यंग नेबर हैज़ डैश, जो यंग नेबर था दैट हैज़ ही हैज़ एप्पल ऑर्चर्ड्स। The desert places is about inner loneliness. In desert places, the writer is unconscious about outer loneliness. Home burial tells about a woman's complaint. She is surprised as how could her husband bury his own son. An old man, winter's night is about natural and human order. Nothing gold can stay is about temporariness of things. For nature, the hardest color to hold is golden color. Unacquainted with the night dash is luminary clock, that is moon is luminary clock. Unacquainted with the night, the main theme is उसमें जो main theme है that is about loneliness. Unacquainted with the night, the inner is most obvious than outer, that is loneliness. Frost is known as, फ्रॉस्ट जो है ये एक रीजनल पोइट के तौर पर जाने जाते थे। 4 times हैज़ रिसीव्ड द पुलिट्जर प्राइज, इन्होंने रिसीव किया था 4 times. What intoxicates the speaker in I can wait grief, that is joy. How long has it been since the speaker in because I could not stop for death died, that is centuries. Death in because I could not stop for death is personified as kindly gentleman. Because I could not stop for death tells about dash of death, ये हमें बताता है inevitability of death के बारे में. In I heard a fly buzz when I died, the light from the windows, that is faded away. The poem's title originally comes from a line in Shakespeare's play Macbeth. Which poem is it? That is out out. इसका टाइटल लिया गया था शेक्सपियर के प्ले मैकबेथ से. What are common themes much of Frost's poetry? That is death, conflict, escapism, nature, Frost, loneliness. In Home Burial, what is the mother's name? That is Emmy. Something there is that doesn't love a wall is a line from Mending Wall, that is what is something that mentioned, that is nature. Frost committed suicide, yes.
What actually bends the birches down to stay in Frost's poem Birches, that is ice storms? Frost's poem Birches is a poem on escapism. Frost's poem Birches depicts the life of a boy away from city life and friends. Frost compares trailing branches of tree with a woman drying her hair in sun. And the next is The Road Not Taken is a poem of two choices. ये दो choices पर मबनी एक poem है that is written by Robert Frost. And Stopping by Woods on a Snowy Evening is a poem of ये लिखी है Robert Frost ने. It tells about a traveler and his horse. The horse represents his conscience and alarm. The woods are lovely, dark and deep. The only sound except that of wind is that is of snowflakes. The rider doesn't stop as long as he has promises to keep. Sleep represents ignorance and death. In Death of Hired Man, name of hired man is that is Silas. This is dash poem, that is a dramatic poem. Silas' fault is that he runs away. Silas' brother is that is a rich person. Silas gets help from his brother. No. Silas in end dies. Mending wall is about ये nationalism और internationalism के बारे में है. The young neighbor doesn't want a wall because it is needless. आई होप इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ़ यू. आज की वीडियो में हमने 60 अबव MCQs डिस्कस किए हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है PPSC के लिए. और आप में से जो लोग चैनल पर न्यू हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सबसे. और आपको इस चैनल पर इंग्लिश लेक्चर PPSC और FPSC की कंप्लीट प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज़.